students, I hope that you all are busy for the coming UPSC Prelims 23 exam. And today I am here to facilitate you with my strategy that how to utilize the rest of the days which are left. I know that you are busy seriously in preparing, but along with all these efforts, in your unconscious mind, there is a hidden fear that how to utilize in the best way the rest of the left days. So in few steps, I will share few ideas. If you utilize that, definitely you will be benefited from it. I'm confident. So I will discuss these ideas in various steps. That is step number 1. Try to solve the previous 5 years CSAT and GS papers. I'm talking about the prelims. The entire video is focused on the prelims exam. So by doing this, by solving the previous 5 years, at least 5 years CSAT, by solving the previous 5 years, at least 5 years CSAT and GS paper, it will enable you to find out those areas which are your weak areas, so that you can work on it and remove all those hurdles which are restricting you to achieve the marks. So this is the first thing, means 5 years CSAT plus GS papers. Okay. Now step number 2. Definitely there are 8 to 10 important areas from which the entire prelims GS paper is crafted, more or less 8 to 10 important areas. But among all those areas, it is not possible for any aspirant to have the same command. Suppose that you must be having command on geography in the best mode, or after geography you must be having along with geography you must be having the command on polity or science and tech, but rest of the areas are lying on the average zone. So don't run behind on those areas which are weak. Try to emphasize yourself on those areas which are really strong and which covers a bigger percentage in your question paper. Suppose that polity is strong, try to emphasize and give more time on that it can provide you a sound best start. That means you know that anybody, a best student who have read everything, then also he can solve 35 to 40 questions easily. But when he cross that number, then it is not very easy to deal with all those questions. So there your smartness and your revision work along with doing the guess which option is not correct, means a type of orientation that you are not having the least information of the correct answer, but you are sure that given options, in the given 4 options, 2 or 3 are not correct, and so you come to the conclusion that the last option is or may be the correct. So this is the type of smartness, guess smartness, which works. So try to emphasize on those areas which are strong. So you have to work on these strong areas. Okay? देखिए बहुत भागने की जरूरत नहीं है, आप खाली आपका जो स्ट्रांग एरिया है उसको ज्यादा स्ट्रांग बनाइए, ताकि उसी से आपकी फ्लाइंग स्टार्ट हो, मतलब वो क्वेश्चंस आपको 35-40 के आंकड़े से ऊपर ले जाने में मदद करेंगे. ठीक है. स्टेप नंबर 3, ट्राई टू डिवाइड योर सिलेबस, GS syllabus, in small segments. Suppose that what is the static part as well as what is the part which belongs from the current affairs. Try, when you are solving the previous 5 years paper, try to make a rough figure
that how much of the percentage lies from the static part as well as from the current affair. Many of the questions are interrelated, means if question have been, the first line have been started from the static part, then it is well connected with the current affair. So when you will be enabling yourself with a clear concept, with the clarity of the concepts on the static part, and you have gone through with the current affairs, what have been happened in that segment in the recent days, then nobody can stop you to deal with that question, and definitely you will have the positive response. So this is the one thing. Okay. Step number 4. What are the high weighted area subjects? When we talk about the high weighted area, then you see that polity plus environment plus, you can say, modern history also, plus geography. These are the areas which have been known as high weightage areas. Okay. So if you see polity, environment, modern history, geography, but when I talk about the modern history, if you see the previous year papers, then the number of questions have been declined. So you can keep economics plus economics. And that is the reason I am removing this, because many of you will ask, why not, sir, you have kept modern history? So economics. So polity, environment, economics and geography. These are the high weightage area which should not be ignored at any cost. ओके आप बचे हुए दिनों में बस इसी फॉर्मूले को लेकर चलिए, दिमाग में कोई डायलेमा नहीं होनी चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आप हारते क्वेश्चन पेपर से नहीं है, आप अपने डायलेमास से, और उस डायलेमा के नाते जो डर पैदा होता है उससे आपकी पराजय होती है, ये ध्यान रखिए। स्टेप नंबर 5. Step number 5. What is step number 5? Suppose that you are studying economics, then try to focus on the banking and the financial law. If you are talking about the energy sector, then what are the alternative energies? Now, Government of India is focusing how to promote the various segments of the alternative energies. So you should be well aware that those static areas which are the part of the environment science or economics or geography or polity, if any, that particular segment had been highlighted in the recent days, so that becomes the part of the current affair, and you should enable yourself to correlate with the static part with the entire current happenings, or you can say with the current affair. So this will pay you in the examination hall. Okay. So what is step number 6? Now you see, bring all your resources together. Means now the days left, keeping that figure in the mind. You should not use multiple books. No, now 4 weeks are left or something like that. Now I have to, let me see, I have gone through Gadya Lakshmikant, and now I should see some, I should spend 1 day or 2 days on the another reference book regarding the polity. Don't do such type of silly mistakes. If you have relied on the particular book of polity, please, in these crucial days, don't search or don't emphasize or don't put your valuable time on the another reference. Rely on that particular book, have multiple type revisions, try to solve maximum question, don't run behind multiple test series, because once you have the conceptual clarity, then if you are solving only 20 test series or 25 test series, that is more than sufficient. Then instead of running behind of various institutions, 50 test series from institution A, 50 test series institution B, and you are running behind the figure to carry on to maintain that figure. So that is not the right strategy. आपका concept clear होना चाहिए,
तो आप 15-20 टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा भवन में जाएंगे। स्टेप नंबर 7, बड़ी बड़ी चीजें कहने के लिए पूरा वर्ष आपने इसको पढ़ा है, इसलिए मैं इसको बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, नाउ यू शुड स्पेंड 15-20 मिनट्स पर डे टू वॉच कि जो आप प्लान्स बना रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी है, उस पर आप चल रहे हैं कि नहीं। यू आर वॉकिंग, यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी और नॉट। कोई डेविएशन तो नहीं हो रही। इज देयर एनी डेविएशन फ्रॉम योर शेड्यूल्ड प्लान? इसको चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सब बेकार की चीजें होती हैं। 8 घंटे पढ़ते, 10 घंटे पढ़ते। मैं हमेशा घंटे वाले कॉन्सेप्ट का प्रबल विरोधी रहा। आपने कितने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, कितने एरियाज को एक दिन में कवर किया है, वो आपकी अचीवमेंट है। आप घड़ी रखकर अपने टेबल पर पढ़ते रहिए, दैट डजंट गारंटी। आप कितने टॉपिक्स पढ़े हैं, आपने कितना सिलेबस का पार्ट कवर किया है, वो आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन देगा, न कि नंबर ऑफ आवर्स जो आप फिगरिंग करते हैं वो आपको किसी तरह का कोई कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, तो ये एक चीज होगी जो मैंने डेविएशन वाली बात कही है। कहीं आप डेविएट तो नहीं हो रहे, कहीं आप ऐसा तो नहीं है प्लान ऑफ एक्शन से दूर हो रहे हैं या वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। सो प्लीज वॉच ऑन दैट, और अगर ऐसा है तो उस पर वर्क करिए। ठीक है, रिवीजन के लिए अभी भी बहुत समय है, ऐसा नहीं है। और घबराने के लिए, डर के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। सो डर के आगे जीत है, हमेशा ध्यान रखिए। स्टेप नंबर 8, मॉक टेस्ट, जिसकी बात हमेशा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर कितने मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। देखिए, मॉक टेस्ट का कोई सेट फार्मूला नहीं है, बट अगर आप 8-10 सालों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, करंट अफेयर्स तो बदलता रहता है, करंट अफेयर्स आर द पार्ट जो हर साल चेंज होता रहता है, बट जो स्टैटिक पार्ट है या जो स्टैटिक से दोज क्वेश्चंस व्हिच आर वेल कनेक्टेड विद द स्टैटिक पार्ट एंड द करंट अफेयर, not only in that particular year but it have been impacted in long term approach, so उस हिस्से को भी आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि how the UPSC is trying to craft such type of questions which are having one part and that is static part and that is well connected with the current affairs. So वो एक interconnectivity, when you will master yourself to understand that type of crafting done by the UPSC, देन वो जो टेरर है क्वेश्चंस का कि समझ में नहीं आते, वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो मॉक टेस्ट से ही निकलता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि 20-25 मॉक टेस्ट लगाइए ईमानदारी से, ऑनेस्टली, एंड दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि मॉक टेस्ट, व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, टेकिंग द मॉक टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। मॉक टेस्ट में 80%, 70% you are doing positively, that doesn't ensure that you will be selected, you will clear the prelims. And if you are only getting 20 questions correct, that doesn't shows that you are not a good aspirant. तो mock test basically आपके तैयारी के लेवल को, it only reflects what the level of your preparation is, है ना, और कहां पर माइन्यूट गलतियां आप करते हैं। Multiple times I have seen that most of the students have choose the correct option, but while filling the answer, I don't know which type of phobia works on them at that particular moment, और वो आंसर गलत ऑप्शन भर देते हैं। सी भरना है, बी भर दिया, है ना, और OMR शीट में, और वो क्वेश्चन सही होते हुए गलत हो गया। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, इन छोटे छोटे रीजंस पर भी आपको अभी से काम करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट करने के बाद एक देयर इज अ सिचुएशन, 100 क्वेश्चन सॉल्व किया, 20 ही सही हुए, टेंशन हो गई। और ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है, एंड दैट इज स्टेप नंबर 9, हाउ टू स्टे पॉजिटिव एंड कूल। सर इट इज वेरी, आप कह सकते हैं सर इट इज वेरी इजी टू से फॉर यू दैट स्टे positive and cool. No, it's not easy for me also, because I know that how much pressure a serious aspirant feels when the day of exam comes near. So I agree with that. I know, I can understand the pressure by which you will go or you must be feeling nowadays. But if you are only
solving 20 questions in the correct version, then also you have to be not lose your confidence. You have to stay positive and calm. Why? Because जो तैयारी होती है, you will feel that you don't know anything. You will feel such type of feeling will come that I am preparing since 2 years or 1 year or more than that, but I don't know right now. I am unable to recall all those information, है ना? But avoid to condition your mind by such type of thoughts. If you have studied that seriously, if you have gone through by that particular subject or area seriously in your preparation time, then keep confidence on your mind when you will go through that given options in that particular question. Definitely, if you are having confidence, if you are relying on your mind, then definitely mind will recall the correct options and the question will be correct. So this will only happen when you will stay positive and you will be cool and calm. Okay? गीता की एक बात मैंने अपने जीवन में भी बताई। देखिए ज्यादा दर्शन की बात नहीं करूंगा, बट एक चीज है कारगर है, ये हर युग में कारगर है। When I was giving my UPSC and various examination, that it works for me and it will definitely work for you. कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, ठीक है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं सर फल की चिंता बिना किए कर्म का एक्साइटमेंट ही नहीं होगा। नहीं, उद्देश्य है आपका, उद्देश्य और फल में अंतर होता है। there is a difference between the goal and the outcome. Your goal is to become a bureaucrat. What you can do from on your part, and that is give your best. मुझे आप एक चीज बताइए कि बेस्ट जब आप कोई चीज इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट वर्स्ट कैसे आ सकता है? बशर्ते वो बेस्ट यूपीएससी के पैरामीटर्स पर होना चाहिए। आप तो कह के आएंगे सर हमने तो 100 क्वेश्चन कर दिया है, बट वो तुक्के वाला किया है कि रियली आपने एक सीरियस कैंडिडेट के रूप में दिया है, ये आपकी अंतरात्मा जानती है। सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, अपने से झूठ मत बोलिए, ऑनेस्टली अपने को इवेल्युएट करिए एंड गिव योर बेस्ट। और बेस्ट का जो आउटकम होता है वो बेस्ट ही होता है, ऐसा मैंने श्रीमद् भगवत गीता से सीखा है और ये काम करता है, इट वर्क्स। ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं 9 स्टेप्स, इस पर आप काम करिए, इट विल वर्क। और जितना आप कर सकते हैं प्रीलिम्स के एक दिन पहले, मैं देखता हूं कि लोग सेंटर पर भी कुछ पतली बुकलेट्स लेके आते हैं, बिल्कुल नहीं। डेली अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कोशिश करिए परीक्षा के कम से कम, अगर आपको दूसरे दिन 8 साढ़े 8 बजे सेंटर पे पहुंचना है तो उसके कम से कम पहले एक दिन पहले से अपने को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, थोड़ा एंटरटेन करिए, कूल रहिए, फैमिली के साथ टाइम बिताइए। और परफॉर्मेंस तभी बढ़िया होती है जब आप स्ट्रेस फ्री हो, जब आप टेंशन फ्री हो, जब आपके पास एग्जामिनेशन फोबिया का कहीं कोई अंदर से किसी तरह का कोई टेरर या फियर ना बैठा हो, तो अपने आप माइंड बेस्ट तरीके से परफॉर्म करता है। तो ध्यान रखिए इन छोटी छोटी बातों का, और सफलताएं केवल बड़ी चीजों से मिलकर नहीं बनती, इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ध्यान रखिए, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। अड़ के तो देखिए एंड डेफिनेटली आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू।